number 1, class 10, subject science, that is chemical reactions and equations. Today we will discuss only 2 topics, that is why do we need balance a chemical equation, and the second one is types of chemical reactions. So our first question is why do we need to balance a chemical equation? हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? केमिकल इक्वेशंस हमारे 2 तरह की होती हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस वो केमिकल इक्वेशंस होती हैं जो कि बैलेंस्ड नहीं होती हैं। दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, whereas in the balanced chemical equation, reactant side is equal to the product side. So here our question is, why do we need to balance a chemical equation? For the need of the balancing of the chemical equation, there is a law of conservation of mass that is already discussed in the 9th class, and according to the law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम तोड़ सकते हैं in a chemical reaction. That means हम ये कह सकते हैं, so number of elements involved in a chemical reaction should remain at reactant and product side. इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, that means they should remain same reactants as well as the products. Next, types of the chemical reaction. How many types of the chemical reactions involved? First type of the chemical reaction is the combination reactions. The reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product. Combination reactions वो reactions होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक reactants मिलकर एक single product बनाते हैं. For example, A and B, these are on the reactant side. अगर हम A और B को combine करते हैं, that means they give us AB product. These are the combination reactions where 2 or more reactants combine to form a single product. For example, burning of coal. Burning of coal, carbon is in the solid form and oxygen is in the gaseous form. अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड पर अगर हम कंबाइन करते हैं, that means they give us the product carbon dioxide, that is gas. Second example is formation of water, पानी का बनना. 2H2, that is gas plus O2 gas, that is on the reactant side. अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो they give us the water, that is the product. So these are the examples of the combination reactions in which 2 or more reactants combine to form a single product. These are known as the combination reactions. And the second one, the second type of the chemical reaction are the decomposition reactions. In these reactions, a compound splits into 2 or more substances. ये वो chemical reactions हैं जिसमें compound जो है वो split होकर 2 या 2 से अधिक substances को बनाता है. एक single compound जो होगा वो split होकर 2 या 2 से अधिक substances को जब बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? Decomposition reaction. For example, A is on the reactant side. A is on the reactant side. A जो है that is compound, and when this compound splits it gives 2 or more substances. That means split होकर ये क्या बनाएगा? B plus C. That is on the product side. Further decomposition reactions are further of 3 types. The first type is the thermal decomposition. Thermal means heat. Thermal means heat. Thermal decomposition, when decomposition is carried out by heating. ऐसी decomposition जो किसके द्वारा carried out की जाएगी? By heating. For example, CaCO3. CaCO3 is the calcium carbonate. That is in the solid form. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा? CaO, that is calcium
oxide and it is in the solid form, plus carbon dioxide that is in the form of gas, and it forms the product calcium oxide plus carbon dioxide gas. This is the thermal decomposition. Second decomposition reaction is the electrolytic decomposition. In electrolytic decomposition, when decomposition is carried out by passing electricity, ऐसे decomposition जिसमें हम decomposition जो है उसको carried out करेंगे by passing electricity. For example, 2H2O that is water and it is in the liquid form. जब हम इसको split करेंगे, decompose करेंगे, that means it gives hydrogen gas plus oxygen gas. This is the reactant side and this is the product side. So here this is the electrolytic decomposition, when decomposition is carried out by passing electricity. And the last decomposition reaction is the photolysis decomposition. In photolysis decomposition, when decomposition is carried out in the presence of sunlight, Photolysis decomposition एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम डिकम्पोजिशन को कैरिड आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फॉर एग्जांपल AgCl, that is silver chloride, that is in the solid form. अगर हम इसमें सनलाइट पास करते हैं तो it gives the result of silver plus chlorine gas. Silver is in the solid form and chlorine is in the gaseous form. So this is the photolysis decomposition reaction. And above said reaction is used in the black and white photography. Above said reaction is used in the white and black photography, that is the photolysis decomposition. The third type of the chemical reaction is the displacement reaction. In displacement reaction, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution. Displacement reactions वो reactions होती हैं जिसमें हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से. फॉर एग्जांपल आयरन को अगर हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ कंबाइन करते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ, दैट मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट. जैसे कि हमने ऊपर कहा भी है कि इन दिस रिएक्शन more reactive element displaces less reactive element from its solution. So here iron is more reactive element. तो iron जो है उसने क्या किया है, उसने डिस्प्लेस कर दिया किस चीज को, उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को. आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और आयरन के साथ जो जुड़ गया वो क्या जुड़ गया, SO4 सल्फेट. दैट मीन्स अब यहां क्या बन गया, ये फेरस सल्फेट एंड कॉपर डिस्प्लेसेस. तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. एग्जांपल दी थी हमने, अगर हम आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आपस में कंबाइन करते हैं तो हियर आयरन इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड iron displaces copper from its position and it attaches with the sulfate, and when iron attaches with sulfate that means it forms ferrous sulfate plus copper. And the fourth reaction is the double displacement reaction. In the double displacement reaction, a reaction in which a new compound are formed by mutual exchange of ions between the two compounds. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक नया कंपाउंड्स तो बनते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, और वो नए कंपाउंड्स तो बनेंगे जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा किसके बीच में, आयंस के बीच में. और म्यूचुअल एक्सचेंज किसके बीच में होगा, बिटवीन द टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा दैट मींस एट दैट टाइम दे फॉर्म द न्यू कंपाउंड. फॉर एग्जांपल Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, Na2SO4 sodium sulfate plus
barium chloride plus barium chloride, and it forms barium sulfate plus sodium chloride. Here the new compounds are formed by the mutual exchange of ions between the two compounds. दो compounds के बीच में क्या होगा? Mutual exchange. अब नए compounds कौन से बने? Ba2 positive and SO4 negative. That is the mutual exchange of ions between the two compounds. Ba2 positive and SO4 negative. There is a mutual exchange between the two compounds of the ions. बेरियम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 2 पॉजिटिव का, और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव का. दैट मींस दोनों की कैपेबिलिटी जो है वो यहाँ पर पूरी हो रही है. बेरियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2 पॉजिटिव, दैट मींस उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का अपना क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है. SO4 नेगेटिव, और जो आपका सल्फेट है उसके पास कैपेबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की. तो इसका मतलब क्या है कि बेरियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, और सल्फेट जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है. सो देयर इज एक्सचेंज बिटवीन द 2 कंपाउंड्स ऑफ द आयंस. एंड द नेक्स्ट concept is precipitate. What do you mean by precipitate? It is an insoluble solid. Precipitate जो होता है वो एक तरह से क्या है? Insoluble solid है जो कि कहां पर इमर्ज होता है? From its liquid solution. So precipitate is an insoluble solid that emerges from its liquid solution. The last type of the chemical reaction is the oxidation reduction reaction. Oxidation reaction. In oxidation reaction, the addition of oxygen to a substance and the removal of hydrogen from a substance. Oxidation reactions हमारी वो reactions हैं जिसमें addition होती है किस चीज की? ऑक्सीजन की, and removal of hydrogen from the substance. Addition oxygen and removal of the hydrogen. Whereas in the reduction reaction, the addition of hydrogen to a substance, उसका opposite है oxidation का. यहाँ पर जो भी वो addition होगी हाइड्रोजन की from a substance and the removal of oxygen from the substance. So here the example of both oxidation and reduction, 2Cu, that is copper plus oxygen, दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड. जैसे कि हमने कहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस. तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें कि एडिशन किस चीज की हो रही है? ऑक्सीजन की. वेयर एज इन द सेकेंड रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा? कॉपर प्लस वाटर. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर एडिशन किस चीज की हो रही है? हाइड्रोजन की. दैट मीन्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज रिडक्शन रिएक्शन. Whereas the removal of oxygen, जहां पर रिमूवल होगा ऑक्सीजन का फ्रॉम द सब्सटेंस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. So this is the oxidation reduction reactions. In oxidation reaction, the addition of oxygen to a substance and the removal of the hydrogen from the substance. Whereas in the reduction reaction, the addition of hydrogen from the substance and removal of oxygen from the substance. So here today we will discuss only 2 concepts, that is why do we need to balance a chemical equation, and the second is the type of the chemical reactions, and here there are 5 types of the chemical reactions that we will discuss step by step. Last जो हमने किया था that is the redox reaction.
Redox reactions are those reactions in which both oxidation and reduction are involved. Such type of the reactions are known as redox reaction. That is already discussed in the previous lecture. And today's our topic is effects of oxidation in daily life. And there are two types of the oxidations that are used in our daily life, that is corrosion and rancidity. The second part is chemical reaction, also classified on the base of temperature. So first question is effect of oxidation in daily life. What is the effect of oxidation in our daily life? There are two types of the effects of oxidation in the daily life. First is the corrosion and the second is the rancidity. What is corrosion? When a metal is exposed to a substance such as moisture, air, water, acid, etc. For some time, किसी भी मेटल को जब हम एक्सपोज करते हैं थोड़े समय के लिए, या तो मॉइस्चर में, या फिर एयर में, या फिर वाटर में, या फिर एसिड में, ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. तो उसके ऊपर जो एक लेयर है वो किस चीज की बन जाती है? ऑक्साइड की. Which weakens the metal, जो कि किस चीज को वीक कर देती है? उस मेटल को वीक कर देती है. weakens means उस मेटल को कमजोर कर देती है. Hence metal is said to be corrode. तो इस वजह से हम उस मेटल को क्या बोलते हैं? corrode. तो corrosion क्या हुआ? When a metal is exposed to air, moisture, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed. A layer of oxide is formed which weakens the metal, and that metal is said to be corrode. For example, rusting of iron. किसी भी लोहे की धातु को जब हम थोड़े समय के लिए मॉइस्चर में या एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, या जो आयरन होता है वो मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसके ऊपर जो होती है वो एक ब्राउन कलर की लेयर की जो एक लेयर होती है वो बन जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन. दूसरा है हमारा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर. सिल्वर के ऊपर जो होती है वो एक ब्लैक कलर की जो एक कोटिंग है वो बन जाती है. थर्ड, ग्रीन कोटिंग ऑन पेपर. एंड तीसरा जो पॉइंट हमारा वो एक ग्रीन कलर की जो कोटिंग है जो उसके ऊपर बन जाती है. तो अगर हमें इन तीनों चीजों को अगर हमें corrosion से बचाना है, that means we have to be use painting. We have to be use painting and greasing. अगर हम इनके ऊपर पेंटिंग या ग्रीसिंग करते हैं तो दैट मीन्स वो मेटल जो होगा वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे कि हम उस चीज को करोड होने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट इज द रेंसिडिटी. द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स when exposed to air. The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. कोई भी हमारे जो food material है such as food items and oils, when they have to become in contact with the air, that is known as rancidity, and it leads to the bad smell and bad taste. तो rancidity हमारा एक ऐसा concept हुआ, the oxidation of fats and oils when exposed to air. When exposed to air, it leads to the rancidity and it leads to bad smell and bad taste. For example, अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जो हमारे बंद पैकेट होते हैं, जैसे फूड आइटम्स के जो हमारे पैकेट्स बंद होते हैं, फॉर एग्जांपल चिप्स के पैकेट है या कुरकुरों के पैकेट जो होते हैं, उसमें जो होती है वो ऑक्सीजन गैस भरी होती है. तो उस गैस को निकालकर हम उसकी जगह पर दूसरी गैस जो होती है उसमें भरते हैं, दैट इज द नाइट्रोजन गैस. अगर हम नाइट्रोजन गैस ना उनमें भरें तो वो जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, जिससे कि वो कुछ समय के बाद जो होते हैं जैसे हम उस पैकेट्स को खोलते हैं तो बैड स्मेल और बैड टेस्ट देते हैं. दैट मींस that they have to become in contact with the oxidation of air. So उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस जो होती है वो
डाल देते हैं। इस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रेज हो जाता है कि व्हाई द फूड आइटम्स दे हैव टू बी फिल्ड विद द नाइट्रोजन गैस, क्यों उनमें नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है। दैट मीन्स क्यों भरते हैं, टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ एयर, फॉर दैट पर्पस नाइट्रोजन गैस इज टू फिल्ड इन दैट पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। ऑलरेडी जितने भी हमारी केमिकल रिएक्शंस थी वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, पर यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारा और आ जाता है कि केमिकल रिएक्शन जो है उनको हम टेम्परेचर बेस पर भी क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बेस पर अगर हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो फर्स्ट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट क्या होती है, रिलीज होती है along with the formation of product, और साथ में किस चीज की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, that is called as exothermic reactions. The reactions in which heat is released and the formation of the product, that reactions is known as the exothermic reactions. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो exothermic reactions वो reactions होती हैं जिसमें heat energy जो होती है वो released होती है। यहाँ पर हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की देयर इज सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दैट इज बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हमारी एग्जांपल है मीथेन। मीथेन को अगर हम किसके साथ ऐड करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, दैट मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर गैस। वाटर ऑलरेडी इज इन द लिक्विड फॉर्म, पर यहां पर जो वाटर है वो हमने गैसियस फॉर्म में लिया है, और गैसियस फॉर्म में इसलिए लिया हुआ क्योंकि वाटर हियर वाटर इज इन द वेपर फॉर्म, सो वाटर को हमने किस फॉर्म में ले लिया है, गैस की फॉर्म में, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। So such type of the reactions are known as exothermic reactions. The reactions in which heat energy is released and the formation of the product is formed, that such type of the reactions are known as the exothermic reactions. And second one is the endothermic reactions. The reactions which requires energy in the form of heat, light and electricity. ऐसी reactions जहां पर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में है, लाइट की फॉर्म में है एंड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है। जब हमारी रिएक्शंस जो होती हैं वो हीट एनर्जी की फॉर्म में या लाइट एनर्जी की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है, तो सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, जिसमें हमने कहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स के थे, जिसमें कि हमारी एक जो रिएक्शन थी फर्स्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में थी, सेकंड में जो थी वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में थी, एंड थर्ड रिएक्शन जो थी डिकम्पोजिशन की, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में थी। दैट मींस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीस टाइप ऑफ द रिएक्शंस इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। So here on the basis of the temperature, chemical reactions are further of two types, exothermic reactions and endothermic reactions. तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।